Good morning, dear student. Myself, Jitendra Chaudhary, and today I am going to teach you your second chapter of physics, pressure. Basically, you observe if we push hard on a piece of wood with our thumb, the thumb does not go into the wood. But if we push a drawing pin into the wood with the same force, our thumb, the drawing pin goes into the wood. It means you can say the pressure is produced when force acts on an object. So you can say here there is a wood piece, okay, and you force applied by your thumb. So, but your thumb is not goes down into the wood because the area is large. यहाँ पे क्या है? एरिया क्या है? ज़्यादा. But here is the pin. अगर आप पिन को जितना फोर्स आपने थंब पे लगाया है उतना ही फोर्स अगर आप पिन पे लगाओगे, सो पिन गोज डाउन इनटू द वुड बिकॉज पिन एरिया इज स्मॉल. जो ड्राइंग पिन है उसका एरिया कितना है? स्मॉल. जबकि दोनों का फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? सेम फोर्स है, बट हियर इज अ एरिया इज लेस. सो प्रेशर, इट मीन्स यू कैन से pressure is a force per unit area acting in a direction perpendicular to a surface of contact. It means एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगेगा, यू कैन से द, क्या बोलोगे आप उसको? प्रेशर. क्या बोलोगे? प्रेशर. इट मीन्स हिंदी में इसको आप दबाव बोल सकते हो. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, प्रेशर इज इक्वल force upon area. Force per unit area. So force per unit area. You know very well what is the SI unit of pressure here? The SI unit of pressure is Newton per square meter or Newton per meter square or Pascal. It means देखो, आप फॉर्मूले से भी उसकी यूनिट निकाल सकते हैं. फोर्स की क्या होती है? न्यूटन. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एंड एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर. इट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, यू कैन से, यू कैन राइट हियर न्यूटन, यू कैन राइट हियर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल. सो पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर. इफ वी कैलकुलेटिंग द प्रेशर, अगर आप कभी जैसे कभी न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं, तो जब प्रेशर को आप अगर कैलकुलेट करते हो, it is quite clear that pressure is inversely proportional to area. Inversely proportional to area ka means if area is increase, inverse means opposite. It means if area is increase, pressure is decrease. Okay, if area is increase, pressure is decrease, or area is decrease, pressure is increase. Inverse means opposite. Okay, and in other words you can say if area increase, pressure decrease, but however pressure is directly proportional to the force. Pressure is directly proportional to force. ये क्या है? इनवर्स है. प्रेशर एंड एरिया क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट प्रेशर और फोर्स का रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स greater the force, the greater will be pressure. It means if pressure will increase, force will increase. Force will increase, pressure will increase. Directly proportional किसका है? pressure and force का जो relation है वो क्या है? Directly proportional. But pressure और area का क्या है? Inversely proportional. Inverse means opposite. Okay, so this is the pressure. And but how can we solve related to pressure numerical questions? Here is a question here. For example, a solid weight
300 न्यूटन। एक सॉलिड है, उसका वेट कितना है? 300 न्यूटन। कैलकुलेट द pressure exerted by the solid when it is kept on a glass surface. Its area of contact is 400 centimeter square. आपको इसमें क्या फाइंड करना है? प्रेशर फाइंड करना है। आपको दिया क्या है? वेट दिया हुआ आपको 300 न्यूटन, प्रेशर, और आपको एरिया कितना दिया हुआ? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मींस आपका जो वैल्यू है वो किस पे होनी चाहिए? न्यूटन में एंड मीटर स्क्वायर में। बट यहाँ पे जो वैल्यू है आपको दे रखी है, कैसे दे रखी है? आपको जो वैल्यू दी हुई है एरिया की वो किस में दे रखी है? सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सो गिवन वेट ऑफ फोर्स, यू कैन से सेम थिंग, इज इक्वल टू 300 न्यूटन दिया हुआ आपको गिवन, एंड हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रेशर। Second one, you are given also area 400 centimeter square here is equal. So how can we convert the centimeter convert to meter square? In 1 meter is equal to 100 centimeter. But here is square. Here is square. So 400 upon 100 into 100 means square है ना, इसलिए इसको क्या करना पड़ा? डबल स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं स्क्वायर को करना पड़ेगा आपको। अगर इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। इसके लिए आपको 400 को 100 into 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देयर इज 400 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो जो वैल्यू आएगी वो 125 मीटर स्क्वायर। सो नाउ ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में वैल्यू। नेक्स्ट वन, द प्रेशर। द प्रेशर हियर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। द प्रेशर हियर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल 300, जो आपको दे रखा है फोर्स की वैल्यू और वेट की वैल्यू, 1 अपॉन 25 मीटर स्क्वायर, जो आपको ये फाइंड किया था आपने, क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 25 इज इक्वल, अब क्या होता है आपको पता ही है, ये जो वैल्यू है इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी। इज इक्वल 300 into 25 is equal to 7500 Pascal. You can say pressure is equal to 7500 Pascal or 7500 Newton per meter square. So if given value directly in meter square, so you have to write here मीटर स्क्वायर वैल्यू। अगर आपको वो डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में दी हुई है वैल्यू तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप मीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर रहे हो मीटर स्क्वायर में, ये इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इफ गिवन वैल्यू इज इन मीटर स्क्वायर। आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर लिक्विड प्रेशर। सो लिक्विड प्रेशर, force exerted by a liquid over a unit area. It means लिक्विड के थ्रू जो फोर्स एग्जर्ट होगा एरिया के ऊपर, जो फोर्स पड़ेगा थ्रू द लिक्विड्स, यू कैन से लिक्विड प्रेशर। ओके, नाउ फैक्ट्स अबाउट लिक्विड प्रेशर। जो इसके फैक्ट्स होंगे लिक्विड प्रेशर के वो क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। It means, for example, there is example here, देखिए इसको, take a rubber ball with a hole with a completely with water. ये आपका रबर बैंड है, इसको आपको रबर बॉल है, इसको आप completely किससे आप फिल करना है? वाटर से फिल करना है। And with a sharp pin, make several holes in all sides of the ball. You will observe that the water comes out with the equal force from each of those holes. It means अगर आपने सब जगह इसका होल करा होगा और इसमें वाटर फुली जो आपने इसको completely fill कर रखा है, so waters come out with equal pressure. So this is the liquid exert equal pressure in all direction. Now second is here, the pressure of liquid at a same depth will be the same. It means
Now diagram is here. In a cylindrical can make of 5 holes along its sides. जो साइड्स है इसकी, आपने इसकी जो इक्वल डेप्थ पे जो होल करे हैं, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फिल द ग्लास विद द वाटर एंड देन यू कैन फिल एंड ओपन ऑल द होल्स. जो होल आपने करे हैं यहाँ पे इक्वल डेप्थ पे, डेप्थ शुड बी इक्वल, डेप्थ शुड बी इक्वल. इन जो होल पे आपने जो वाटर जो अंदर फिल हो रखा है, ओपन द होल एट द सेम टाइम you will observe that the water flow out equal force from the holes. जितना भी वाटर होगा वो इक्वल फोर्स से बाहर आएगा, क्योंकि डेप्थ क्या है, सेम है. इफ डेप्थ विल सेम, प्रेशर विल बी सेम. अंडरस्टूड? ओके. नाउ थर्ड, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ. इट मीन्स इफ प्रेशर, इफ डेप्थ इज इंक्रीज, अगर आप डेप्थ, अगर उसकी जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना उसका प्रेशर ज्यादा होगा. किसका? लिक्विड का. इट मीन्स प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज, प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ. हमेशा ऐसा ही होगा, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज हियर, लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ऑलवेज लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. क्योंकि हमेशा क्या है, लिक्विड कहां से ज्यादा फ्लो करेगा, कहां जाएगा, जो हायर लेवल होगा उससे लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हियर, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इट मीन्स इफ प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेंसिटी, इफ वाटर डेंसिटी इज इंक्रीज, if water density is increase, so pressure will be increase. So dear student, here is the question for you. You can solve at your home for your practice. If the area of contact slab weighing 2500 Newton is 25 meters square, how much pressure can it apply when kept on the ground? On the ground. It means आपको प्रेशर, आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है. आपको फोर्स भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है. ओके, तो यू हैव टू फाइंड एट योर होम. एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. इससे क्या होगा, आपकी जो और वीडियोस आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. सो थैंक यू.